You are watching the Kanpu Info channel and I am the instructor Muhammad Yasin, and today class we are discuss the relation between Pakistan and India. So the main dispute between Pakistan and India is the Kashmir issue, and without its solution the relation cannot be improved. पाकिस्तान और भारत के माबेन असल तनाज़ा मसला कश्मीर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत के जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का जो बुनियाद है वो मसला कश्मीर है, और बग़ैर ही इसके हल से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। Without the solution of this, the relationship between Pakistan and India is not better. Better ties can be established between both countries in all the field if it is resolved. बेहतर ताल्लुकात कायम हो सकते हैं दोनों ममालिकों के माबेन तमाम शोबों में अगर ये मसला हल हो जाए तो। Pakistan has always showed a positive attitude, but India is not serious about resolving these issues. पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रवैया दिखाता था, लेकिन हिंदुस्तान इस मसले को हल करने में संजीदा नहीं थे। For resolving the water issues, the Indus Water Treaty was signed between Pakistan and India on 1960. पानी के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के माबेन इंदस मुआहिदा हुआ 1960 में। इंडिया इज स्टिल वायलेटिंग दिस ट्रेटी। हिंदुस्तान अब भी इस मुआहिदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है। द शमला पैक्ट वाज साइंड बाय बोथ द लीडर ऑफ 1971 whereby they agreed that their difference would be resolved through discussion. शमला मुआहिदा हुआ था 1971 की जंग के बाद। दोनों रहनुमाओं ने उस पर दस्तखत किए, जिसके तहत उन्होंने इत्तेफाक किया कि उनकी इख्तिलाफात को बातचीत के ज़रिए से हल किया जाएगा। Both countries made effort to increase cooperation through South Asian Association of Regional Cooperation means SAARC since 1985, but they produced no satisfactory result. दोनों ममालिक ने कोशिशें की ताकि वो ताउन बढ़ाए, इलाकाई ताउन को बढ़ाए। मीन सार्क में दाखिल हुए दोनों 1985 में, बट इसका भी कोई काबिल एतमाद नतीजा नहीं निकला। The Prime Minister of Pakistan and India got a chance to meet at the SAARC conference. दोनों के प्राइम मिनिस्टर को दोबारा मौका मिला कि वो एक दूसरे के साथ मिले सार्क कॉन्फ्रेंस में ऑन 1988 में एंड द पैक्ट वाज साइंड टू रिस्ट्रिक्ट ईच अदर। और ये मुआहिदा तय पा गया, इस पे दस्तखत हुए कि रिस्ट्रिक्ट करना है दोनों को फ्रॉम द न्यूक्लियर अटैकिंग दियर न्यूक्लियर साइट्स। जोहरी हथियार के इस्तेमाल से दोनों को रेस्ट्रिक्ट करना था, और इस मुआहिदे के तहत दोनों एक दूसरे के जोहरी मुकामात पर हमला नहीं करेंगे। Some betterment of the relationship appeared in Pakistan and India in 1990. The mutual trade and travelling facilities were increased. 1990 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई। बाहमी तिजारत और सफरी सहूलियात में इजाफा हुआ। No effort can be fruitful without the solution of Kashmir issue amicably. कोई भी कोशिश नतीजाहेज नहीं हो सकता जब तक मसले कश्मीर को खुशलूबी से हल न किया जाए। मसला कश्मीर का हल के खुशस्लूबी के बगैर कोई भी कोशिश या एफर्ट्स का कुछ फायदा दोनों ममालिक को तब तक नहीं होगा जब तक वो इस बड़े इशू को सेटल न कर सके। पाकिस्तान is firm on its stand that Kashmir issue should be settled according to the resolution of United Nations and the wishes of the helpless Kashmiris. पाकिस्तान अपने मौके पर
اپنے موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور بے سہارا کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق بھی۔ Agra Conference was held between the President of Pakistan and the Prime Minister of India from 14th of 17 July 2001۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھارت کے مابین آگرہ کانفرنس ہوئی۔ The 3 days dialogue on this conference was proved unsuccessful۔ 3 دن کا جو گفتگو اور بات چیت تھی اس کانفرنس میں وہ بغیر نتیجے پر ختم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو 3 دن کا مذاکرات آگرہ میں ہوئے تو اس کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ And the SAARC conference organized in the January 2004 in Islam Abad۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں SAARC کانفرنس منعقد ہوا۔ The talks were held between the President of Pakistan and the Indian Prime Minister and many agreements were signed۔ صدر پاکستان اور ہندوستانی وزیر اعظم ملاقاتیں ہوئے اور اس میں بہت سے معاہدے طے پا گئے۔ بٹ جب تک نریندر مودی کی حکومت ہوگی تو تب تک پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری کی کوئی بھی امید نہیں ہے، کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی جس کا جو اس وقت لیڈر ہے وہ نریندر مودی ہے اور وہ مسلمانوں کے سخت مخالف ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور جب تک نریندر مودی صاحب کی حکومت ہوگی تب تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری کی کوئی بھی امید نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس تعلق کو بہتر بنایا جائے، لیکن بھارت کی جانب سے جو رسپانس تھا وہ بہت منہ توڑ تھا۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کے ان مقامات اور ان